Morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Yes, yes. No Ratnas are already there. He would be 10th Ratna, right? Yes. Good morning, good morning. And good Monday too, right? Yes. So, what was the last point? We are done with the cast, right? So, that is GSGhurye's viewpoint on caste, right? Look, as I said, there may be disagreement with GSGhurye, right? But since we have to study in syllabus, तो कॉलेज में जब प्रोफेसर GS घुरे को पढ़ाते तो लगभग क्लास खाली हो जाता है, राइट? क्योंकि many people, disagree to his viewpoints. I try to, keep a balanced, and we have to, like, description and appreciation, as well as criticism, है ना? So we will criticize also. We will try to, look into some factual, substantial things to justify him. Otherwise, we will criticize at the end, isn't it? Okay. So next topic, GSGhurye's viewpoints or perspective on urbanization. GSGhurye perspective on urbanization. Huh? Acha, religion. Let us discuss religion first. Yes, religion. GSGhurye's perspective on religion. Yes. I just said in previous class too, according to GSGhurye, religion is important source of culture. Religion shapes cultural pattern in any society. In Indian society too, social cultural pattern, values, norms, and institutional framework, according to GSGhurye, largely based on religion, religious, prophecies, religious propagations. First point. Second point, according to Ghurye, Indian society, since time immemorial, integrated and united, not because of functionality of structures as perceived by a structural functionalist, rather religion. Right? उनका मानना था ये, उनका point of view कि religion through its values, norms, prophecies, united and integrated Indian society into one community. Right? He argued that the commonality in consciousness, right, or consciousness of common kind in Indian society since time immemorial is based on religion. So religion, at his the time to which he belonged to, there was debate, discussions between uh, two group of sociologists. One, those who followed popularized Marxist ideology, those who considered religion is opium of the masses. Ghurye disagreed. Ki no, this is ideological stance in context of India. In Indian society, every aspect of society, be that economic, be that political, be that educational, social, cultural, familial, every aspect of society very much influenced by and shaped by religion, right? Particularly in context of politics, he highlighted the facts, keep it at ancient time to medieval to modern times, not the central political authority. Rather, the authority of religion united the people into one community. राइट ऐसा जीएस घूरिया साहब कह रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइट करता है सेकुलरिज्म यूनाइट करता है दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज क्रिटिसिज्म वी क्रिटिसाइज ऑन दिस लाइन लेकिन उनका मानना था कि रिलीजन से ही throughout the historicity society had been integrated united into one common
होल और कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में, राइट? We cannot perceive or we cannot look at religion from Western lens. European lens. European lens क्या कहता था? There were discourses on secularization. आगे discuss करेंगे Brian Wilson, Steve Bruce, isn't it? We have a topic also, secularization, declining significance of रिलीजन, जिसमें वो पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं अपना। टालकर पार्सन का व्यू आया कि नहीं नहीं, अब मॉडर्न टाइम्स में रिलीजन परफॉर्म्स सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन, नॉट ऑल द फंक्शन। Over the period of time, different structures have been specialized and different structures perform different functions. So religion has lost its functional significance. It is limited only to few functions. According to Talcott Parsons too. Brian Wilson ने कहा कि नहीं नहीं, disengagement हो गया. Religion has widely been disengaged from the wider social aspects or wider society. Religion disengage हो गया wider society से with modernization, according to Brian Wilson. Similarly, Steve Bruce also, कि over the period of time, plurality has increased, right? Secularism has increased, religion has lost its significance in day-to-day life, है ना? And उसके आगे तो जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि religion is opium of the masses, isn't it? It is just manifestation of alienation and estrangement. More the people alienated and estranged, more they rely on religion. But it is not so. According to Ghurye, in Indian context, इंडिया में ऐसा नहीं है। रिलीजन इज नॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ एलिनेशन एज प्रोपोगेटेड बाय कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि रिलीजन इज द सोर्स एंड बेसिस ऑफ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना? दिस इज इन द कोर ऑफ इंडियन कल्चर, राइट? इंडियन सोसाइटी, राइट? रिलीजन, पर्टिकुलरली इंडियन साधुज की वो चर्चा करते हैं, उनका बुक भी है इंडियन साधुज। वो कहते हैं कि इंडियन साधुज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ensuring cultural religious continuity. Cultural religious they went to different regions, they established monasteries, isn't it, in different regions of India, and they also transmitted knowledge from one generation to another generation. And ancient times में तो oral tradition था knowledge का, knowledge continuity का, right? So in this context, I mean, religion as a source of social cultural organization explained by GSGhurye, right? अब critic ये point उठाते हैं कि when he talks about religion, तो he talks only about Hindu religion. So yes, this is limitation. GSGhurye did not see and did not mention about Christianity, कि how Christianity, contributed in social cultural development. Don't you think Christian missionaries contributed in social cultural development in India? Yes, na? Right? Education में, health में, many, right? Islam too contributed, cultural contribution, archaeological, isn't it? Architectural contributions, isn't it? Right? आज भी, you will see many states still following medieval period that system of land organization. Land organization में आज भी उत्तराखंड गवर्नमेंट वही सिस्टम फॉलो करता है, दो सिस्टम, द सिस्टम विच वाज सेट बाय, yes, abhi till late Urdu was used for land registry and all, isn't it? Right, in JNK also, right, in Uttarakhand also, right? The language, although now written in Hindi, but the uska jo content hoga, that is Urdu, isn't it? Usage of, so that is contribution, cultural synthetic language. Urdu emerged during Islamic period, isn't it? And Urdu was the language of masses, isn't it? Not the classes. And so used in state systems also, isn't it? Right. So this is, ये critic का part हो जाता है. लेकिन overall, if we count on, तो not only one religion, all religions, वहाँ पे वो सही हैं. All religions contribute to social cultural development. Yes or no? All religion contribute to social cultural not only development but also stabilization. All religion की हम बात करें, yes ना? Religion has function of stabilizing the society. It provides cultural continuity and pattern, isn't it, to the society? Yes or no? Right? All religions, religion in general, if I say, isn't it? So that aspect was highlighted, glorified by GSGhurye, right? कि in Indian society one cannot understand, इस पॉइंट को समझिए जरा,
in Indian society, sociologists cannot understand reality in totality without understanding the social cultural contribution of religion in society. Social cultural contribution of religion in society. और आज भी GS Ghurye is relevant in the context that not only in India, world over, Indian spirituality, yoga and all, right, has contributed to stabilize the society and culture. Large number of Europeans, oriented towards a spiritual, cultural, religious, traditions, isn't it? That shows significance of religion in day-to-day life, isn't it? That was something, highlighted and glorified by GS Ghurye, है ना? Right. Please note. थैंक गॉड, इतना सुनने के बाद भी कोई नहीं। तो कॉलेज में क्या होता था, GS घूरिए पे थोड़ा कॉलेज में क्या लेफ्ट राइट का ऑर्गेनाइजेशन रहता, कॉलेज पॉलिटिक्स भी रहता है ना। एंड GS घूरिए सेकेंड ईयर में तब तक तो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाते बच्चे, आइडियोलॉजिकली सेंसिटिव, है ना। तो उसमें कई मतलब ऐसा भी वाक्य होता प्रोफेसर कि नहीं ये सेल्फ करना है, नहीं पढ़ाऊंगा। क्लास में कुछ डिस्प्यूट हुआ, गुस्से में आके चले गए, है ना, कि नहीं वी विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक, यू डू योर सेल्फ, राइट। तो दिस इज, बट यस, इसको थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। उसको अगर अप्लाइड कंटेक्स्ट में समझते हैं तो रिलीजन इन जनरल, अगर GS घुरे का जो क्रिटिसिज्म है कि ही टॉक्ड ओनली अबाउट हिंदू रिलीजन, अदरवाइज रिलीजन इन जनरल इज सोर्स ऑफ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्टेबिलिटी, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्टेबिलिटी, है ना। वो तो रिलीजन का मिक्स थोड़ा सा पॉलिटिक्स में, थोड़ा सोसाइटी में हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। अदरवाइज religion is source of knowledge, culture, isn't it, traditions, yes na, right. Okay, please note, GS Ghurye considered religion comma religious organization as important source of कल्चर, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कल्चर। कल्चर तो समझते हो ना, कल्चर व्हाट वी हैव इज आवर कल्चर, और आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, थिंग्स, राइट, आइडियाज, ऑल एवरीथिंग, हमारा ड्रेस, फूड, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कल्चर, राइट। अंडरलाइन कर लो इसको। इंडियन सोसाइटी, नेक्स्ट सेंटेंस, इंडियन सोसाइटी कॉमा institutions, values and norms, Indian society, comma, values and norms largely draw inspiration from religion, right, from religion. He believed that India as a society survived across time because of common values, comma, common culture, common institutional framework, and consensus among its members based on religion, right. Consensus among its members based on religion, right, full stop. Indian nation, India has been integrated into nation. India has been integrated into nation
because of common consciousness, because of common consciousness emanating out of religion or based on religion, common consciousness based on religion. कॉमन कॉन्सियसनेस को अंडरलाइन कर लो, इंटीग्रेशन को अंडरलाइन कर लो, है ना, है ना, कंसेंसस को अंडरलाइन करो प्रीवियस में, है ना, ये सब कीवर्ड याद रखना, राइट। जीएस घुरे साहब जब लिखेंगे तो, है ना। फॉर घुरिये और अकॉर्डिंग टू घुरिये, कंटिन्यू इन दिस, according to Ghurye, it is not the central political authority. It is not the central political authority, comma, economic system that united and integrated India, united and integrated India and sustained it as one society, sustained it as one society, comma, rather religion united India into one national community. Rather, religion united India into one national community. Right. So, one cannot understand, continue in this, understand Indian society, how it, Indian society, comma, how it survived and sustained from ancient to medieval, survived and sustained from ancient to medieval to modern times, ancient to medieval to modern times, without understanding the social cultural role of religion, the social cultural role of religion. Next line. Next paragraph. Right? Next paragraph. According to Ghurye, to understand social order, comma, social solidarity, as well as change in society, one has to understand the basic tenets, TENETS, tenets बोले तो features, basic tenets of the Hindu religious ideology. Hindu religious ideology. He believed that even the Indian secularism mentioned in Constitution, he believed that even Indian secularism mentioned in Constitution is outcome of or a product of tolerant spirit of Hinduism. Tolerant spirit of Hinduism. Right?
टॉलरेंट स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो कि अपन ट्राइब्स में भी डिस्कस करेंगे उसको भी मेंशन करते हैं। उनका कहना ये है कि हिंदुइज्म इवॉल्व्ड in Indian society on Indian soil with advent of Aryans and their interaction with non-Aryans. Advent of Aryans and interaction with non-Aryans. उनका मानना ये था कि टॉलरेंट उसके बारे में बोल रहे हैं वो कि at the time of advent of Aryans, non-Aryans believed in tantric, isn't it? Religion. There were many folk religions, isn't it? Non-Aryans worshipped Kali, Ganesha, Shiva, isn't it? Right? है ना ये वाला, right? तो non-Aryans believed in some religion. Aryan, advent of Aryan, Aryan with them, Aryan worshipped mystical, spiritual religion, worshipping of Vishnu, Indra, Varuna, isn't it? And Aryan and non-Aryan religious faiths and beliefs entangled and evolved into Hinduism. Evolved into Hinduism, right? Many deities like, as I said, Shiva, Ganesha, Durga, Kali, these were non-Aryan deities, right? These deities, over the period of time, with entanglement as Hinduism evolved, worshipped equally or by both the Aryans as well as non-Aryans, as Hindus, as Hindus. Hindu religion that evolved, according to Ghurye, with entanglement of mystical spiritual religion of Aryans, tantric magical religion of non-Aryans, united both Aryans and non-Aryans into one religious community, isn't it? And this evolved as a tolerant religion, according to GSGhurye, which accommodated people, isn't it? Which accommodated people, right? And over the period of time, because of this accommodative, orientation, further many folk religions, ancient times में जो folk religions थे, आप चले जाएंगे राजस्थान में, उत्तराखंड में, right? यूपी, बिहार, there are many folk religions, isn't it? You will see folk people, rural people worshipping you don't know, है ना? Those god and goddesses in mainstream. All those religions were accommodated. Anybody from Rajasthan? है ना? राजस्थान में many लोक देवताज. राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पूरा लोक देवता के ऊपर अलग ही 10 पेज का चैप्टर होता है. उत्तराखंड पीसीएस देंगे तो लोक देवताज, राइट, है ना? तो पहले ग्लोबल बाबा नहीं थे, मतलब इंडिया में लोक देवताज, फोक religion. Over the period of time, entanglement, accommodation, and thus part of now Hindu religion. हिंदू रिलीजन के जितने लोक देवता हैं वो सभी हिंदू रिलीजन में वर्शिप होते हैं. तो इस तरीके से रिलीजन इवॉल्व्ड, रिलेटिंग, इंटीग्रेटिंग द पीपल ऑन इंडियन सॉइल, राइट. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, यूनिटी है, इसमें रिलीजन का रोल है. एंड दिस इवॉल्व्ड एज, क्या लिखा आपने, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंट, स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म, isn't it? Right. Please note, एक सेंटेंस और नोट कर लो, इसी में कंटिन्यू करो, कंटिन्यू इन दिस. हाँ, हिंदुइज्म इवॉल्व्ड विथ इंटैंगलमेंट. इंटैंगल होना समझते हो ना, है ना? इंटैंगलमेंट ऑफ मेनी
non-Aryan folk religious traditions with the Aryan religious traditions after the advent of Aryans. After the advent of Aryans. After the advent of Aryans, full stop. And therefore, there is huge diversity. Therefore, there is huge diversity in Hindu religious cultural traditions. Huge diversity in Hindu religious cultural traditions. Full stop. Such diversity has increased over the period of time with more and more integration of the people, right? Integration of the religious beliefs in Hinduism, people, their beliefs in Hinduism. Integration of religious beliefs or the people and religious beliefs, full stop. For Ghurye, एक sentence और इसे मैं continue. For Ghurye, religion played important role in integrating local, comma, sub-regional, local, comma, regional, comma, sub-regional, region में भी sub-regions होते हैं ना, sub-regional beliefs into a macro level, MACRO, macro level system of worshipping, in Hinduism or as Hinduism, macro level system of worshipping as Hinduism, right? Hinduism की बात करते हैं, हिंदू तो नहीं, मिस इंटरप्रेट मत कर देना कहीं, है ना? बाद में लोगों ने कुछ प्रोपोगेट किया, राइट? यस, नेक्स्ट लाइन. According to Ghurye, next paragraph. According to Ghurye, in Hinduism, comma, साधुज और इंडियन साधुज, SADHUS, साधुज ही लिखो, है ना, क्योंकि उनका इंग्लिश में वो लिखते हैं. इंडियन साधुज इज नेम ऑफ हिज बुक, है ना. साधुज अंडर ब्रैकेट सेंट played important role in integration and sustenance of social cultural religious traditions, integration and sustenance of social cultural religious traditions, right? Full stop. The Indian sadhus as selfless, जिसका कोई स्वार्थ नहीं हो. अभी के साधु जो देखते हैं आप, उसके बारे में घुरे साहब ने नहीं लिखा है. उनके पहले, मतलब जो ग्लोबल बाबा टाइप आए हैं, उनके पहले, है ना. क्या लिखा आपने? इंडियन साधुज एज सेल्फलेस सेंटली प्रिस्ट, SAINTLY, saintly priest has contributed in
contributed in spreading the spirit of contributed in spreading the spirit of toleration, a spirit of toleration, and promoted solidarity, promoted solidarity through their religious services in Indian society. Promoted solidarity through their religious services in Indian society. राइट मतलब कुछ एक जैसे लोगों को आप लोग सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए पर्टिकुलरली जो इग्नोरेंट हैं, है ना, और जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फिर इग्नोरेंट, है ना। इग्नोरेंस, किसी को साइंस का अच्छा नॉलेज हो सकता है, किसी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी का नॉलेज हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन वुड हैव नॉलेज अबाउट रिलीजन, राइट, रिलीजियस टेनेट्स, कल्चर, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सबको हो। तो उनके लिए जो वो उनके व्यूज एंड रिव्यूज एंड लाइक्स के लिए जो बोलते लोग, तो उसके बेसिस पे आप जनरलाइज नहीं करेंगे कि सभी ऐसे ही होते, है ना। रिलीजियस persons have their dedication to religion, they are dedicated to religion, और अगर religion पे dedication होता है तो कोई भी दूसरे रिलीजन और तीसरे रिलीजन और फोर्थ रिलीजन का बुराई या फिर उसमें लड़ाई में नहीं जाता, isn't it? अगर उसका डेडिकेशन, जहाँ डेडिकेशन डेविएट होता है, कुछ पॉलिटिकल हो जाता है उसमें, है ना, कुछ इकोनॉमिक हो जाता, क्योंकि आज हम कंज्यूमर सोसाइटी में हैं, तो बाबा को भी BMW चाहिए, है ना, यस ना, लग्जरी चाहिए, तो ये सब चीजें आ जाती तो प्रॉब्लम होता। अदरवाइज ऐसा नहीं जनरलाइज करेंगे। इंडियन साधुज हैव हिस्ट्री ऑफ स्प्रेडिंग टॉलरेशन, इजंट इट, राइट, स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, राइट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, गांव गांव में जाके लोगों के बीच में जो आपस में झगड़े होते हैं उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, फैमिली में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, राइट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लाइक इफ यू गो टू दीज स्टेट्स, मतलब यहाँ ऐसे नहीं पाएंगे आप, जैसे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, यू विल नॉट सी कि ओनली ब्राह्मण्स आर प्रेस्ड, नो, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट्स आर, जिसको कहते हैं महंत ऑफ मठ, पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट्स, एंड जनरली महंत्स हैड नो ट्रेडिशन ऑफ इंटरफेरेंस इनटू रिलीजन। कुछ एक महंत मठ का रहा है जो कि फ्रीडम के समय भी काफी पॉलिटिक्स में इंटर वो रहे, अदरवाइज नॉट, अदर्स वेर नॉट, राइट। जैसे गोरक्ष पीठ की बात करें तो वो पहले से ही पॉलिटिकली एक्टिव, फ्रीडम के टाइम से पॉलिटिकली एक्टिव, अदरवाइज मेनी महंट्स ऑफ मोनास्ट्रीज दे आर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, सोशली कल्चरली एक्टिव, आई हैव सीन राइट। जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, जो विलेज है हमारा, उसके पास में भी, and he has nothing to do with any of the political leaders or political parties. कभी भी उनका, लास्ट ईयर भी वहाँ पे कुछ ओकेजन था, सो ही कॉल्ड मी, मैंने कहा कि आप लोकल मंत्री विधायक, नहीं नहीं नहीं, हम इन सबको नहीं बुलाते, हम तो एजुकेशनिस्ट और ऐसे लोगों को बुलाते जो गांव के बच्चों को या इनको थोड़ा मोटिवेट करे, पढ़ाई के लिए करे, कुछ ऐसे बात करे। सम रामचंद्र दास उनका नाम था, नाम है मतलब, तो आई मैनेज टाइम, एक दिन के लिए मैं गया वहाँ पे, है ना, काफ़ी बगल में 2 हाई स्कूल्स थे, स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनसे बात करी, उनको मोटिवेट किया, है ना, कुछ कहानियाँ उनको सुनाई, बताई मोटिवेशंस के लिए। तो मेनी सच मोनास्ट्रीज आर देयर, महंट्स आर देयर हु आर टोटली नॉन पॉलिटिकल, डेडिकेटेड देमसेल्फ टू रिलीजन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और आज भी वो डिपेंडेंट हैं किस पे, वही जो 1, 2, 10 रुपए देते, उनको कोई अगर डोनेशन भी 5,000 रुपये देता तो मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो ये मानते कि इससे करप्शन आएगा, ज़्यादा पैसा होगा, करप्शन आएगा, इज इट राइट। उन्होंने मुझे भी बोला कि अगर आपसे बन पड़े तो एक हमारा ये गेट बहुत पुराना हो गया है, ये बनवा देते, मतलब उन्होंने पैसे नहीं मांगे। मैं बोला कि बाबा मैं आपको पैसे, ना 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 ना, पैसे नहीं,
पैसे नहीं लूंगा, अगर आप बनवा सकते तो बनवा दो, पैसे नहीं चाहिए। तो there are many such sadhus, you know, who have sacrificed their family and family life for the people, isn't it? And such tradition is there in other religions also. केवल हिंदू religion में नहीं रहा, isn't it? Politically sensitive people and are political, you know, totally dedicated to spirituality and religion. The people found in all religions, isn't it? Right. तो जो जीएस घुरे का पॉइंट ऑफ व्यू है, कई बार हम मिस इंटरप्रेट कर जाते कि हम आज के अरे घुरे साहब ने बहुत पहले लिखा ये तो, है ना, ये सब जो बात करी उन्होंने बहुत पहले, वो इस पॉलिटिक्स के दौर के नहीं हैं, है ना, जहां इंटेंगलमेंट ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हो गया है, राइट। तो एनीवेज, तो उस कॉन्टेक्स्ट में घुरे को देखेंगे तो आप है ना, मतलब यू विल नॉट बी कॉन्फ्लिक्टिंग टू हिज व्यू पॉइंट्स, है ना। ओके, नेक्स्ट, according to Ghurye, Indian sadhus contributed to stability, order and stability, not only through religious services, but also their social culture, religious cultural services, better say, religious cultural services. Indian sadhus contributed to order and stability, social order and stability, not only through religious cultural services, not only through religious cultural services, but also social cultural services, but also social cultural services. अब आप कहेंगे कैसे? Next sentence, Indian sadhus played important role in social disputes resolution, social disputes resolution, right. क्या आपको लगता है कि इंडियन स्टेट हैड इट्स रिच टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स? आज भी हम गवर्नेंस के एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हैं, यस ना, इंक्लूजन के लिए। अभी 3 डेज पहले पीएम साहब एड्रेस्ड 2020 कैडर आईएएस, तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने बोला, है ना, कि we are now shifting governance, I mean center of governance from Delhi to other regions of India. And yes, that is visible, inauguration of projects from different regions of India. अभी तक क्या रहा है? Centralized, isn't it? तो स्टेट का एक्सटेंशन एक्सपेंशन आप देखिए कि विलेजेज में, रूरल एरियाज में जो डिस्प्यूट्स होता है, आज भी पंच सरपंच, isn't it? Yes or no? और जहां पंच एंड सरपंच have been diluted because of politics, basically caste divisions, you know, illiteracies, isn't it? तो वहां पे खून खराबे ज्यादा है। You see, murder का cases, you know, every day reported in some states, yes ना, नॉर्दर्न स्टेट से आप देखेंगे कई बार आईएएस से बात करते हुए पता चलता है कि इसको रोका ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लैंड डिस्प्यूट है। अब कहां कहां, क्या ईच एंड एवरी फैमिली में पुलिस सर्विस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डिस्प्यूट्स होते, विलेज में डिस्प्यूट्स होते, राइट, इधर पीपल आर माइग्रेंट, वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट देयर, इजंट इट? यस ना, कुछ ही लोग वहां रह रहे हैं, राइट, and those who are there, they are not socialized to follow the collectivity, you know, decisions, isn't it? And so conflict होता, tension होता, killings, murders, etc. बहुत सारा इस तरीके का। अब इसमें like इस context में he seems to be relevant कि in ancient times, in medieval times, जब state का reach and penetration was not so deep into the rural areas, into the folk culture, Indian sadhus, religion used to play important role in dispute resolution, क्योंकि वो घूमते रहते, जाते रहते, राइट,
और अभी भी आई सी लाइक देयर इज अ स्मॉल मट्स कंट्रीब्यूट इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। आपस में पंचायत से, फैमिली से अगर इस डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व होगा तो लोग उनके पास जाते, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता था पहले। इजंट इट राइट? सो दिस इज, क्या लिखा आपने? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, राइट? यस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। है ना? नेक्स्ट इज इंडियन साधुज have contributed, next point, Indian sadhus have contributed in a spread of learning and education too, in a spread of learning and education too. By full stop, learning and education too, by patronizing, by patronizing learning of scriptures under bracket religious text, patronizing learning of scriptures under bracket religious text. Indian sadhus provided socio-cultural religious continuity, socio-cultural socio-religious cultural continuity, social religious cultural continuity, social religious cultural continuity, right? Indian sadhus set up monasteries, in different far-flung areas of India, far-flung areas of India, and provided cultural unity, to Indian society, cultural unity to Indian society. Lastly, therefore, concluding, therefore, according to Ghurye, according to GSGhurye, religion in Indian society should not be, religion in Indian society should not be studied from Western European, from the lens of Western European sociology, from the lens of Western European sociology. European sociologists studied and analyzed religion from the context of modernity, studied and analyzed religion from the context of modernity, right? From the context of modernity, full stop. In Indian society, one must take into account the factors of continuity as well as change. Factors of continuity as well as change, right? In Indian society, Hindu religion has evolved and transformed with many new meanings and orientations. New meanings and orientations. For example,
spirituality, spirituality, right? Bhakti, etc. with continuity of with continuity of its past traditions, past cultural traditions, continuity of past cultural traditions, right? बस अगर आ गया जीएस घूरिए ऑन रिलीजन, बस इसको कट पेस्ट कर देना है ना? यहाँ से पैराग्राफ चेंज करो, लास्ट वाला। हाँ हाँ, देयरफॉर, जहाँ से देयरफॉर लिखा पैराग्राफ चेंज, राइट? देयरफॉर से पैराग्राफ चेंज, राइट? ओके, सो दिस इज नाउ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट, लास्ट में क्रिटिसिज्म, लास्ट में ये सब पर्सपेक्टिव ऐसा पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा। इस बार क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर तो नहीं आएगा। इस बार क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एनालाइज जीएस घूरिएज इंडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी विथ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अपन ये डिटेलिंग इतना कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको एक पैराग्राफ ही लिखना होगा रिलीजन पे, है ना? अगर सेपरेट आ गया जीएस घूरिए ऑन रिलीजन, तब तो शॉर्ट नोट्स आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पूरा, जो इस बार पूछा। इस बार एमएन श्रीनिवास इन शॉर्ट एंड इंडोलॉजी इन लॉन्ग हैव बीन आस्क्ड। नेक्स्ट ईयर एआर देसाई साहब इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये नहीं आएगा, रिपीट नहीं होता जनरली, राइट? सो लास्ट में क्रिटिसिज्म करेंगे, है ना? ओवरऑल, यस, गॉट इट? या, दिस इज बैलेंसिंग ऑफ कंटेंट, है ना? जीएस घूरिए को जब आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने लगते हैं ना, तो प्रॉब्लम होता है। ये जीएस घूरिए कब फ्रीडम के समय के सोशियोलॉजिस्ट हैं, है ना? राइट, अर्लीस्ट सोशियोलॉजिस्ट, फाउंडिंग फादर, राइट? ओके, नेक्स्ट, रूरल अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन। Yes, yes. In India, G.S. Ghurye's perspective on urbanization, ideological perspective on urbanization in India, ideological perspective. Right. अब here again, जो उनका बेसिक पॉइंट है कि अर्बनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी हैज इंडिजिनस सोर्स। बेसिक पॉइंट क्या होगा घुरिए का? कि अर्बनाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी हैज इंडिजिनस सोर्स। अर्बनाइजेशन could not and should not be understood from the modern perspective of industrialization. यूरोपियन सोसाइटी में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज इमर्ज हुए आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन इंडियन सोसाइटी टू मॉडर्न अर्बन सेटलमेंट्स डेवलप्ड आफ्टर advent of Britishers, their establishment of port cities, and in due course of time, industrialization. लेकिन वो कहते हैं कि in Indian society there is a strong continuity from the past, right? In every aspect of society, when it comes to urbanization, we see Indian society urban settlements started, developing in ancient times with development, growth and development in agriculture, right? With growth and development in agriculture, the surplus of agriculture was brought at a place in the rural area. Rural area में ही एक place पे surplus को लाते बेचने के लिए over the period of time, those places developed as market centers, and further over the period of time with growth and development, those market places developed into urban centers, urban settlements, right? And there was great interdependence between rural and urban. Rural and urban में क्या था? Great interdependence. अभी क्या है? Interdependence है? नहीं. Migration, orientation of people from rural to urban, isn't it? Right? More and more people are quitting agriculture and moving to urban areas. Getting your point? And because of this, such orientation, in place of interdependence, right? अभी क्या बढ़ गया? Dependence. Now people in rural areas are dependent on urban. Urban पे dependent हो गए,
isn't it? And because of such dependence, the problems emerged in urban areas. And yes, this is true. कितना भी आप स्मार्ट सिटीज बना लें, cities cannot be smart without smart villages. Until unless we make it a interdependent system, right, problems will continue. Government का इतना spending हुआ JNURM के ऊपर, है ना, improvement हुआ infrastructure का, but burden of population did not decline on urban infrastructure. क्या burden decline हुआ? आज भी civic amenities and facilities पे burden है या नहीं? And major cause is migration from rural to urban. ये natural population growth नहीं होता urban areas में, right? Population growth because of migration, isn't it? So GS Ghurye मानते कि such orientation of dependence started during British period because of British mercantile policy and British land settlement policy, right? Britishers destroyed the interdependent system of urban and rural, isn't it? Right? And all the problems which emerged in urban settlements in the process of urbanization that started during the British period and continued because of the failure of state policies. After Britishers, state policies failed in balanced development of rural and urban, and so problems continued. Crux यही है. वो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ urbanization का हमारा indigenous source रहा है. We cannot and we should not understand urbanization in India from European lens और modernization का lens से, है ना? वही इंडोलॉजिकल हो गया. He referred to a scriptural text. उन्होंने टेक्स्ट का रेफरेंस दिया, अर्थशास्त्र का रेफरेंस दिया, एंड मेनी अदर्स टेक्स्ट का रेफरेंस पे ही एक्सप्लेन्ड अर्बनाइजेशन, राइट? सो प्लीज नोट, अकॉर्डिंग टू घुर्ये, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज इंडिजिनस सोर्स, right? It is not result of modernization. As we see in Western societies. Urbanization started during ancient times. Urbanization started in ancient times with growth and developments in agriculture, in rural India. In agriculture, full stop. Taking references from historical texts, Ghurye argued that growth and developments in agriculture required more market places to trade the surplus product. Full stop. Some areas of village developed as market to exchange the surplus food grains. Full stop. Next paragraph. Over the years, these marketplaces developed into towns
developed into towns, full stop. Development of towns needed administrative, development of towns needed administrative, judicial organizations, administrative judicial organizations to resolve, to administer and resolve, better say, to administer and resolve, to administer and resolve the issues and disputes of townsmen or people living in town. Disputes, issues and disputes of people living in towns. Full stop. Many other institutions emerged in due course of time to uh, to facilitate the smooth functioning of the market as well as administration of the cities. Administration of the cities. These towns, administration of towns लिखो, cities नहीं, administration of towns. These towns emerged as important unit of state, emerged as important unit of the state. अब state आ गया, political unit, state, for not only for economic organization, but also for political administration. Full stop. And therefore, full stop के बाद लिखना, and therefore the cities, towns and cities, city बन गया, town expand होके, towns and cities enjoyed patronage of the rulers or ruling class. The rulers or ruling class. Patronage of rulers and ruling class, right? These towns developed as important unit, economic unit. These towns developed as important economic unit for supply of material goods, under bracket jewelry, artifacts, etc., and other luxurious items, material, etc., or other luxurious items, bracket close, and weaponry. Towns क्या बन गए? Supplier of material goods and weapons. बताइए, अभी हम weapon import कर रहे हैं. Yes ना? हमारे तो इंडिजिनस सोर्स weapon का है ना? क्या? पीएम साहब ने भी स्पीच में पिछली बार बोला था, शायद कहीं तो बोला था उन्होंने
किसके बारे में, किस जगह के बारे में बोला था? जिस पे कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर कट्टा के बारे में बात कर रहे हैं, देसी। हाँ, किसी प्लेस के बारे में तो स्पीच आया था। हाँ हाँ, इलेक्शंस के पहले। अच्छा अच्छा, आर्म्स का फैक्ट्री, ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, कि पहले जहाँ कट्टा बनता था अब वहाँ। ओके, यस यस, ओके। नहीं, लेकिन जीएस घुरे साहब ने कट्टा वट्टा की बात नहीं करी है, उन्होंने बस ये इंडिकेटिव दिखाया है कि उन्होंने ये बताया कि मटेरियल प्रोडक्शन was based in Indian cities, Indian towns, and it had indigenous source of consumption. समझो जरा इस पॉइंट को, indigenous source of consumption by the ruling class, by the feudal class, ruling class, क्योंकि टाउन्स जो सिटीज में टर्न हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पैट्रोनेज जैसे आपने लिखा ना कि enjoyed patronage of ruling class, isn't it? तो उसका दूसरा ये कि वेपनरी, स्टेट को क्या चाहिए होता है डिफेंस के लिए? वेपन्स, इजंट इट? सो इंडिजिनस सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडिजिनस सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, इजंट इट? उनका ये दिखाने का है कि हमारे यहाँ भी जो कारखानाज, वी हैड कारखानाज एंशियंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में भी कारखानाज, इजंट इट? महकमे कारखाना का रेफरेंस मिलता है मुगल पीरियड में, अकबर के समय में। तो दैट वाज देयर, यू नो, कारखानाज में यहीं से प्रोड्यूस होता था, राइट? Those कारखानाज in European society turned into modern industries. हमारे यहाँ because of colonial policies, those कारखानाज were destroyed, isn't it? उस पॉइंट पे वो हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे, राइट? कि अर्बन सेंटर्स वेयर सेंटर्स ऑफ, यू नो, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू। ऐसा नहीं था कि केवल लोग रहते और सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड होता, isn't it? सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर से दैट स्टार्टेड, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम emerged as important production unit, right? Production. So try to understand कि indigenous source हमारा मतलब native source of, you know, urbanization and economic centers as this urban centers emerged as economic centers, starting with surplus trade of agriculture, agricultural products, food grains, to production of jewelry, artifacts, many other luxurious items as well as weapons. Right? Next line, next paragraph. According to Ghurye, Indian urban settlements, according to Ghurye, Indian urban settlements has self-sustenance system, self-sustenance system. Many urban settlements gained eminence in ancient times. For example, eminence, 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 right? In ancient times, like बनारस, वाराणसी नहीं लिखते हैं वो, बनारस ही लिखते हैं, है ना? बनारस, कॉमा कांचीपुरम, जयपुर, उज्जैन, एक्सेट्रा, बहुत लिस्ट बताते हैं ये सब कुछ, एक्सेट्रा. According to Ghurye, such self-sustenance system, self-sustaining system was destroyed by British policies, destroyed by British policies, right? British mercantile policy, MERCANTILE, mercantile policy, and land settlement policies both caused
pauperization, both caused pauperization, pauperization पहले भी लिखा है आपने, yes ना? Pauperization means becoming poor. Pauperization means becoming poor, right? Caused pauperization in urban as well as rural areas. Pauperization in urban as well as rural areas. Full stop. In urban areas, the artisans, craftsmen, comma, कारखाना, KARKHANA, कारखाना owners, etc., were all destroyed because of import of finished goods, import of finished goods and export of raw material, right? The towns, new towns and cities established by Britishers, new towns and cities established by Britishers no longer provided an outlet, no longer provided an outlet for agricultural products, comma, handicrafts, artisan work, metal work, wooden work, etc. Wooden work, etc. Right? In due course of time, all such production units or significance of such production unit, better say, significance of such production, कैसा, artisans, craftsmen, metal work, etc. Significance of such production unit was destroyed. Full stop. जरा पॉज लीजिए यहाँ पे. आज भी आप देखोगे, मतलब इतने साल हो गए, आज भी अर्बन टाउन्स में there are limited outlets for artisans, craftsmen, isn't it? Handicraft work, and mostly we'll see artisans, craftsmen, handicraft on road side. जो एंटर कर रहा होगा हाईवे टाउन में, तो एंट्रेंस पॉइंट पे विल सी, या फिर एग्जिट पॉइंट पे विल सी. इन टाउन ऑल्सो, जैसे ऐसी इन देहरादून जहाँ मेरा घर भी है, उसके आसपास पीपल फ्रॉम मुरादाबाद, है ना, डिफरेंट एरियाज से अपने सामान लेकर बैठे रहते. डेली एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस मैन एंड MDDA ऑथोरिटीज, राइट? क्योंकि वो प्लेस डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं है ना, दैट इज हाईवे का एरिया, या फिर MDDA का एरिया या MCD का एरिया. इजंट इट? दिल्ली में आप दिल्ली में भी देखते हैं आप, है ना, आज भी आउटलेट्स का. तो जो उस समय डिस्ट्रॉय हुआ, वो पॉपुलाइजेशन चूंकि ऐसा लेवल का था, है ना, कि दैट स्टिल कंटिन्यूज. है, आउटलेट्स हैं, बट लिमिटेड. यस और नो? राइट. सो वही, दैट पॉइंट वाज हाईलाइटेड बाय GS घुरिये. मेटल वर्क, है ना, राइट? कितना सुंदर मेटल वर्क होता है हमारे यहाँ इंडिया में, राइट? हालांकि अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज से लास्ट 10 ईयर्स में थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. अब क्या, एक्सपोर्ट इंटरलिंक हो गया,
राइट लेकिन इसमें भी क्या है कि अभी भी जो ट्रेडर्स हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन इज हायर देन दोज हु आर मैन्युफैक्चरर। राइट ट्रेडर्स का प्रॉफिट मार्जिन इज हाई क्योंकि नॉलेज है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है। आई नो सम पीपल यू नो those who deal in export import from मुरादाबाद कुछ नहीं करते, महीने में बस 2 टूर उनका होता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एंड फिर लिविंग लाइफ ऑफ लग्जरी। सारा प्रोड्यूस कहाँ होता? मुरादाबाद के अंदर, सहारनपुर के अंदर, है ना। ब्रास वर्क, वुडन वर्क फ्रॉम सहारनपुर, वुडन वर्क, एंड दे ओनली फैसिलिटेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट बेनिफिट भी लेते वो, एक्सपोर्ट बेनिफिट जो गवर्नमेंट से मिलता वो भी उन्हीं के पास आता जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर है ना। तो दिस इज, अब ये सब सिस्टम कब आया? जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उनका, पॉपुलराइजेशन, इजंट इट, है ना, जो अर्बन एरियाज था उससे दे वर फोर्स टू गो बैक टू द विलेजेज, है ना, राइट, एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर राइट स्पेस इन अर्बन एरियाज, राइट। पोस्ट एलपीजी तो जितना प्रोड्यूस हमारे हैंड आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन का था वो सब चाइना ले गया। चाइना ने एज इट इज उसका कॉपी करना शुरू कर दिया, एंड चाइना यू नो प्रोवाइड्स चीपर, इजंट इट प्रोड्यूस, इजंट इट, यस ना, उनका प्रोड्यूस जो है काफी चीपर प्रोड्यूस है, राइट। सो दिस इज ओके, नेक्स्ट लाइन। तो मतलब ये सब पॉइंट्स है, सब्सटेंशिएट आप कर सकते हैं। आज भी आप देखते हैं ना आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन यू नो स्ट्रगलिंग, राइट। सो दैट इज स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू घुरे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। और उनका ये पॉइंट है, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि अर्बन सेटलमेंट्स नो लॉन्गर रिमेन एन आउटलेट फॉर रूरल प्रोड्यूस, और द आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन का प्रोड्यूस जो होता था उसके लिए पहले क्या था? बिगिनिंग में अर्बन सेंटर्स वेयर एन आउटलेट, कि वहां प्रोड्यूस होता, अर्बन सेटलमेंट्स में उसका सेल होता, राइट। लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया, राइट। ग्लोबलाइजेशन ने फर्दर उसको इम्पैक्ट कर गया। कभी एनालिसिस ऐसा करना हो तो एक लाइन ग्लोबलाइजेशन का भी लिख देना। पोस्ट एलपीजी नो इंपोर्ट ऑफ, राइट, फिनिश्ड गुड्स, right, unhindered import, actually unhindered import of finished goods, right, yes। next line of thought, पंजाब से हैं यहाँ लोग? पंजाब, पंजाब में चाइनीज सामान बहुत मिलता है, राइट, यस ना, बहुत बहुत इम्पोर्ट, चूंकि पंजाब के लोग ट्रेड में बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, राइट। लुधियाना, जलंधर, कभी, है ना, नहीं कनाडा नहीं, यहाँ, राइट, यस, इन महाराष्ट्र ऑल्सो, महाराष्ट्र, राइट, जो ट्रेड हब्स जहाँ पे ज़्यादा है, राइट। ओके ओके, नेक्स्ट लाइन। अकॉर्डिंग टू घुरे, rural to urban migration, rural to urban migration in search of employment opportunities started during British period. In search of employment opportunities started during British period. The traditional artisans, craftsmen, etc., who lost the patronage, of ruling class, who lost the patronage of ruling class, जो ब्रिटिश रूलिंग क्लास था वो किसका प्रोटेक्ट करता था? ब्रिटिश मर्चेंट्स, यस ना, ब्रिटिश मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करता था, नॉट लोकल, है ना। who lost their patronage of ruling class were also socially economically destabilized, socially economically destabilized. In such condition, in such situation, in such condition, problems in urban areas started emerging, right? Growth of slum, comma, problem of over urbanization,
problem of over urbanization and related problems and other related problems emerged during British period growth of slum, comma, over urbanization and related problem. Over urbanization and related problem emerged during British period and continue till date. Continue till date. According to, lastly, last paragraph, according to GSGhurye, urban centers which at a time were cradle of innovation, according to GSGhurye, urban centers which at a time were cradle of innovation, cradles of innovation, urban areas are cradles of innovations, have become centers of poverty and deprivations, have become centers of relative poverty and deprivation, relative poverty and deprivations. The policy makers, lastly वो suggestion भी देते हैं, the policy makers must adopt the policies for indigenous development and interdependence between rural and urban, indigenous development and interdependence between rural and urban, interdependence between rural and urban, right? Got this point? बस इतना ही. हाँ. Yes, yes. Yes, tell me. अच्छा. And therefore, मतलब he argued that the policy makers need to adopt indigenous, क्या लिखा आपने? Indigenous development and interdependence of rural and urban. ऐसा policy which lead to indigenous development and ensure interdependence between rural and urban, no dependence of rural on urban. अभी क्या है? Rural का dependence on urban. ब्रिटिश काल में क्या हुआ? Rural का dependence on urban. Right? उसको reverse करने की जरूरत है. According to GSGhurye. Right? Next heading, subheading दो. GSGhurye's Indological perspective on tribes. GSGhurye's Indological perspective on Indian tribes. Indological perspective on Indian tribes. Tribes लिख लो. Tribes है ना? Tribes in India. उनके ऊपर ट्राइब्स इन इंडिया के ऊपर GSGhurye का इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ना. ठीक है. देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस समझ लो, a debate discussion started both in intellectual sphere as well as political sphere about a status of tribes in India, है ना. तो in both intellectual academic sphere as well as political sphere, like Constituent Assembly also debated for the status of tribes in India. Constituent Assembly में भी debate चल रहा था and academic discourse में debate, right? And the academicians were divided into two groups. One under Warrior Alvin, the then census commissioner, and other under GSGhurye, M.N. Srinivas, his follower, and others. Isn't it? Warrior Alvin stressed, चूंकि वो census commissioner थे, he was very close to Nehru, right? His opinion mattered, for the government. तो उन्होंने he advised government to set up national parks for the tribals for
revitalization and reinstatement of the tribal culture which was destroyed during British period. British policies से जो destruction हुआ था वो चाहते थे कि that should be revitalized, isn't it? And so national parks should be set up for the tribals. Concept of national park उन्होंने दिया वेरियर एल्विन ने. GSGhurye opposed on the basis of and he presented Indological references. Indological references बोले तो textual references. Textual reference उन्होंने present किया कि tribes and caste Hindus are not separate entities, both are part of Hindu culture. उनका मानना ये था कि both are part of Hindu culture. फिर उन्होंने evidences present किए कि at the time of advent of Aryans, Indian society was inhabited by many non-Aryan groups, isn't it? And in course of interaction, the Aryan culture and non-Aryan culture entangled and developed into Hindu culture, right? But because of geographical isolation, the tribes remained poor and backward, isn't it? And GSGhurye referred the tribals as backward caste Hindus. Backward caste Hindus. They are not away from and outside from Hindu culture and caste fold, rather they are backward caste Hindus, and he advised the state to make policies for integration of tribes into the mainstream culture, mainstream society than isolation of tribes, isn't it? He presented evidences, from Ramayana, right? अब जो एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट किया वही बात करेंगे अपन, है ना, उसमें चेंज नहीं हो सकता. ही प्रेजेंटेड एविडेंस ऑफ राम एंड सबरी, प्रेजेंटेड एविडेंस ऑफ वानर सेना, राइट, हु सपोर्टेड राम, राइट. ही प्रेजेंटेड एविडेंस फ्रॉम महाभारता एंड मैरिज ऑफ भीम एंड हिडिंबा tribe, Bhim, caste Hindus, married, isn't it? Such evidences were presented that tribes are not isolated, rather they are backward caste Hindus because of geographical isolation, right? So policies, उन्होंने ये भी कहा कि because of British policies, tribals were further isolated, जिसका समझ आपको आएगा जब colonial policies अपन discuss करेंगे. Right, Britishers adopted 3 policies on tribes and all 3 policies isolated tribes from mainstream society. उनको isolate किया, isn't it? So he gave reference of those policies also, right? कि because of colonial policies, tribes have been isolated from mainstream society, and so all efforts should be made for integration of the tribes, isn't it? और उसी का आगे tribes में अपन discuss भी करेंगे. Since Nehru's personality was accommodative personality, so he neither said no to Elwin nor yes to Ghurye. He accommodated both point of views into his tribal Panchsheel. है ना, Panchsheel में उन्होंने accommodate किया both, isn't it? And शायद यही कारण भी रहा कि इतना समय लग गया reinstatement of tribal rights into forest produce. वो act कब आया? 2006 में. जो rights were taken away by the colonial rulers, 100 years back, those rights were reinstated after 150 years, isn't it? क्योंकि government adopted a soft policy, of integration and reinstatement of rights of the tribals in the beginning में, है ना? खैर वो ट्राइबल पंचशील में बात करेंगे, ट्राइब्स इन इंडिया में. अभी बस इतना ही जानकारी आपको, ठीक है? प्लीज नोट, according to GSGhurye, tribes in India, tribes of India, better say, of India are, inverted comma में लिखना, backward caste Hindus. Backward caste Hindus, ये प्राइमरी उनका पर्सपेक्टिव है. Backward caste Hindus, they remained backward because of geographical isolation, because of their geographical isolation, full stop. Before the advent of Aryans, multiple ethnic groups were present
multiple ethnic groups were present, multiple racial groups were present in Indian society. Right. Multiple ethnic groups, racial groups were present in Indian society. Aryans did not impose Hindu culture, social religious culture on the non-Aryans, rather Hinduism evolved over the years, in course of interaction, social cultural interaction, in course of social cultural interaction between the Aryans and non-Aryans, social cultural interaction between the Aryans and non-Aryans, right? Aryans mystical, magical and spiritual, Aryan apostrophe S, Aryans mystical, magical and spiritual culture got entangled with, entangled with tantric, materialistic and magical culture of tribes that led to evolution of Hinduism. ट्राइब्स यहाँ मत कहने का मतलब उनका क्या है? नॉन आर्यंस, राइट? यस, ट्राइब्स जो बहुत सारे ग्रुप्स थे, है ना? नेक्स्ट सेंटेंस, such entanglement and integration of tribes and Aryan castes is reflected in worshipping of deities in Hinduism, right? Hinduism. Tribes worship, tribal deities like Ganesha, Shiva, Kali, etc. have got equal space in Hindu culture, along with Aryan deities. कई बार हमें डिसएग्रीमेंट के साथ भी, या इमीडिएट कंफर्म नहीं भी करे कि अरे ये कैसा बात कर रहे हैं फिलोसफिकल, ये कैसा, तब भी हमें करना पड़ता है, राइट? सो इसको नोट कर लेंगे आप एंड इंटरनलाइज कर लेंगे. जीएस घुरे साहब ने लिखा है तो अपन मान लेंगे, है ना? यस, मतलब जो गॉट दिस पॉइंट. कई बार कॉलेज में डिबेट डिस्कशन हो जाता था इन सब चीज़ों पे, इसीलिए बार बार मैं आप लोग को ये बताता रह रहा हूँ कि आप ये लिख लेंगे, भले ये फिलोसफिकल आपको लगे, लेकिन इसको मेंशन करेंगे, है ना? ट्राइब्स के ऊपर जब भी लिखेंगे, ट्राइब्स इन इंडिया भी हमारे सिलेबस में है, ना, और उसमें है पर्सपेक्टिव भी पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी
पर्सपेक्टिव्स, इजंट इट? आइसोलेशन एंड इंटीग्रेशन का पर्सपेक्टिव पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन का पर्सपेक्टिव किसका है? जीएस घुरिये का है ना? यस, एंथ्रो में बहुत डिटेल में पढ़ते लोग, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एंथ्रो नहीं है, सोशल एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, जो कि हम कर रहे हैं सोशल एस्पेक्ट्स पे बात। ये रिलीजन किसका एस्पेक्ट है? सोसाइटी का एस्पेक्ट है, हमारे सिलेबस में है, यस ना? यस, क्या लिखा आपने? हैव गॉट इक्वल स्पेस विथ आर्यन डिटीज लाइक विष्णु, इंद्र, वरुण, etc. And therefore present day Hinduism believed in by both the tribes as well as caste reflect the fact that tribes are not separated or isolated from Hindu culture and society. And therefore he argued that tribes are backward caste Hindus. Next paragraph. GSGhurye criticized and rejected Warrior Elvin apostrophe S Warrior Verrier Elvin Elvin Warrior Elvin apostrophe S approach of isolation of the tribes isolation of the tribes from caste Hindus, full stop. He believed that such approach will threaten national unity and integration. Such approach will threaten national unity and integration. He referred or he gave examples of separatist movements of northeastern states. उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया कहाँ से? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, and argued that isolation of the tribes will further lead to such movements threatening national integration, will lead to many such movements, separatist movements and movements threatening national integration. Therefore, all efforts, according to Ghurye, all efforts should be made for integration of the tribes and cultural unity, between tribes and non-tribes.
right? Integration of the tribes within Hinduism will promote integration in Indian society. Will promote integration of Indian society into Hinduism. मतलब integration of tribes into, क्या लिखा आपने? Within Hinduism will promote, yes, integration or national integration. Will promote national integration. Will promote national integration. है ना? ये point of view था घुरिये का on tribes, right? याद रखना है कि मतलब he gave references, उसको लिखना जरूरी नहीं है. He gave references from रामायणा, महाभारता, isn't it? Right? एक आपने लिख ही दिया कि हिंदुइज्म इवॉल्व विथ इंटैंगलमेंट, उतना काफी है ना? नेक्स्ट लाइन, क्रिटिसिज्म ऑफ जीएस घुरिये. क्रिटिसिज्म ऑफ जीएस घुरिये. फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो यही होगा कि ओवर है. हाँ, प्लीज नोट, जीएस घुरिये इज क्रिटिसाइज्ड फॉर his ethnocentric bias. His ethnocentric bias. Ethnocentric bias, B-I-A-S-E, bias. याद है ना आपको? एथनोसेंट्रिज्म मतलब क्या? ओवर ऑब्सेशन फॉर ओन कल्चर बेस्ड ऑन हिंदू रिलीजन, राइट? एक सेंटेंस और लिखो. He is क्या लिखा आपने? He is criticized for ethnocentric bias, full stop. He overemphasized, according to critic, he overemphasized on Hindu religion and culture and failed to recognize contribution of other religious culture to Indian society. Right? Next paragraph. He did not recognize, हाँ point कर लो ये paragraph. He did not recognized development of Indian society and culture. Development of Indian society and culture during medieval period or British period under Islamic and British rule. Under Islamic and British rule. Many changes and developments, इसी में कंटिन्यू करोगे. Many changes and developments occurred during medieval periods and British period in Indian society in spheres of, in Indian society in the spheres of art. Many changes and development occurred in Indian society in the spheres of art, architecture, B capital, right? Yes, in the spheres of art, comma, architecture, language, art, architecture, language, food habits, dress code, lifestyle,
टाउन प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज, रेलवे कब आया? ब्रिटिश काल में। टेक्नोलॉजीज, टेलीफोन, टेलीग्राफ सब ब्रिटिश काल में आया। यस ना, है ना? एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न एजुकेशन एंड आइडियोलॉजीज। जो आइडियोलॉजी आए, इक्वालिटी, फ्रीडम, आइडियोलॉजीज एक्सेट्रा, राइट, है ना? इन सभी स्फीयर्स में चेंज हुआ ना। बट इन हिज राइटिंग जीएस घुरिये did not throw light on these positive changes. Positive changes, yes or no? Right, जैसे मॉडर्न एजुकेशन पॉजिटिव चेंज है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पॉजिटिव चेंज है ना, राइट? गेटिंग योर पॉइंट? ही रिमेन्ड फोकस्ड ऑन कल्चर एंड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू, राइट? सो एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट, he presented an, according to Marxist critic, according to Marxist critic, he presented an over Hinduized view of Indian society. Over Hinduized view of Indian society. He presented an over Hinduized view of Indian society. Full stop. His viewpoint on tribal his viewpoints on tribal is based on the Hindu mythological texts than the facts. His viewpoints on tribals are based on Hindu mythological texts than the facts, according to critique, है ना? He did not conduct any field study. He did not conduct any field study to validate his viewpoints on caste or tribe. Caste and tribe. To validate his viewpoints on caste and tribe. Right? He did not, or he failed to see, इसी में कंटिन्यू कर लो, he failed to see the dysfunctionalities of religion and culture, dysfunctionalities of religious culture, better say, dysfunctionalities of religious culture in modern societies. dysfunctionalities को अंडरलाइन कर लेना। मिडिल रेंज थियरी के अकॉर्डिंग क्या है? फंक्शंस भी है एंड डिसफंक्शंस भी है, डिसफंक्शनलिटीज, इजंट इट? नेक्स्ट लाइन। अब ये बार बार, अब आप मैच्योर हो गए हो इतना कि मुझे बार बार ये बताना ना पड़े कि डिसफंक्शनलिटी कहाँ। अब रिलीजन का डिसफंक्शनलिटी तो है ही ना, फंक्शन से एज वेल एज कॉम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, नोशंस ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस, इजंट इट? है ना? और ये केवल एक रिलीजन की बात नहीं है, सभी रिलीजन्स में है ना, राइट? तो उसको सोशियोलॉजिस्ट क्या करते, रिकॉग्नाइज करते, अपने स्टडीज में रिकॉग्नाइज कर लेते, है ना? यस, यस, ओके। नेक्स्ट लाइन। आजकल फिर से मीडिया कवरेज में बहुत ज़्यादा है ना, अभी न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, है ना? तो बहुत पहले मैंने बोला था 2014-15 में क्लास में कि कोई रोमांटिसाइज करता है मैक्रो रिलीजन पे, मेजर रिलीजन पे, लेकिन इसका ये नहीं कि वो रोमांटिक ओरिएंटेशन केवल एक रिलीजन पे रहेगा, वो कास्ट पे भी आएगा। कुछ पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट को रोमांटिसाइज करेंगे, कुछ रीजन को रोमांटिसाइज करेंगे, कुछ अदर रिलीजन्स को रोमांटिसाइज करेंगे, इजंट इट? जो इंटेंगलमेंट होता है तो वेरिएबल लेवल पे होना शुरू हो जाता है। और ओवर द ईयर्स जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट्स और ये सब देखने को मिलता है तो लगता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही इस मामले में राइट, है ना? ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास, दिवाली में आप देखते हो ना, कोई बड़ा बॉम्ब बजाता है, कोई छोटा सुतली, क्या बोलते हैं उसको, तो जिसको आलू, तो जिसको जो मिलता
वेरिएबिलिटी रहता है ना, तो वैसे ही कोई कास्ट, कोई एथनिसिटी, कोई रेस, गेटिंग अ पॉइंट, है ना, उसको अभी सब में। एनीवेज, कमिंग बैक टू A.R. Desai is also criticized. Sorry, A.R. Desai also criticized GSGhurye. A.R. Desai also criticized GSGhurye. मतलब A.R. Desai कौन है? मार्क्सिस्ट ही हैं। ऊपर वाला जी क्रिटिसिज्म किसका है? मार्क्सिस्ट का ही है, और A.R. Desai भी मार्क्सिस्ट हैं, है ना, आपके सिलेबस में लिखा है। A.R. Desai also criticized GSGhurye for romanticizing with Indian society. Romanticizing with Indian society and its culture. For him, बोले तो for Desai, for him, studying India from lens of culture and religion, studying India from lens of culture and religion provides no space to understand, or religion provides no space for understanding the real India, which lives in caste, class, gender, caste, class, gender, inequalities. Real India is still characterized by economic, social, cultural inequalities and disparities. Economic, social, cultural inequalities and disparities. Real India still, Desai के according, still exists in social, economic, cultural, political disparities and inequalities. Caste का disparity, class का disparities in education, है ना? According to AB, Andre, according to Andre Bete, Beille, Andre Bete, according to Andre Bete, Ghurye's perspective is unidimensional. Ghurye, apostrophe S, perspective, ideological perspective is unidimensional. It only reflects the book view. Of Indian society. Book view of Indian society, particularly related to caste and religion. He advocated for multivariant. किसने एडवोकेट किया? आंध्र बेते ने। ही हाँ, क्या था, क्या कास्ट एंड रिलीजन, मतलब इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द लेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, वही ना? क्या है ही? हाँ, बुक व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन, मतलब उनका लेंस जो था लिमिटेड था। ही एडवोकेटेड मतलब बेते ने एडवोकेट किया। ही एडवोकेटेड फॉर मल्टीवेरिएंट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग of caste, analysis and understanding of Indian society, not caste, Indian society, not only from
the lens of caste, not only from the lens of caste, but class and power too. Class and power too. Right? अंडर ब्रैकेट लिख लेना ट्रिनिटेरियन. ट्रिनिटेरियन इनका पर्सपेक्टिव कैसा है? ट्रिनिटेरियन पर्सपेक्टिव बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कास्ट, क्लास एंड पावर तीनों को अप्लाई करते कौन? आंद्रे बेते, है ना? यस, एमएन श्रीनिवास. लास्टली, एमएन श्रीनिवास also criticized GSGhurye for ignoring the field view and limiting Indian sociology only to the book view. M.N. Srinivas also criticized GSGhurye for ignoring field view, inverted comma में लिखना, field view मतलब based on studies, and limiting Indian sociology to book view, है ना? राइट, जो टेक्स्ट से इंसाइट मिलता है केवल उसी पे लिमिट करने को, बुक व्यू. राइट, यस ना, ही फॉलोड मैक्स वेबर. आगे समझ में आएगा कि ये ट्रिनिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है ये मैक्स वेबर का है ना? राइट, यस, ओके. रियलिटी इज इनफाइनाइट किसने बोला? मैक्स वेबर ने. कॉम्प्लेक्स, मैक्स वेबर. इनके अकॉर्डिंग भी इंडियन सोसाइटी का रियलिटी इज इनफाइनाइट, इट इज हार्मोनिक एज वेल एज डिसहार्मोनिक, है ना? इन्होंने, घुरे ने केवल हार्मनी पे बात किया. ठीक है, सो दिस इज, बस हो गया. राइट, अब इसको जस्ट मेमोराइज कर लेना, काम हो जाएगा एग्जाम में. इससे ज्यादा सोचोगे ओवर थिंकिंग में जाओगे, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है. क्वेश्चन इस बार का देख लेना, है ना? जितना डिस्कस किया उससे इस बार का क्वेश्चन हो रहा है और वही क्वेश्चन रिपीट भी होता है. That is. तो उसी बात के लिए तो क्रिटिसिज्म किया ना, उसी पॉइंट को तो क्रिटिसाइज कर दिया ना, वहां तो हो गया ना. हाँ, तो इसी बात के लिए क्रिटिसाइज किया ना उनको कि ओवर हिंदुआइज्ड व्यू, है ना? जैसे क्रिटिसिज्म में ये भी लिखा जाता है कि ही इज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी. लेकिन उस पॉइंट को हम आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज करेंगे क्योंकि दैट इज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट. गेटिंग योर पॉइंट? इसलिए सीधा हमने लिख दिया कि ओवर हिंदुआइज्ड व्यू. राइट, यस.